Good morning, sir. Very good morning, beta. हेलो जया, यस सर। बेटा और कोई नहीं आया क्या? हाँ सर, भेजे हैं अभी। हाँ, ये फोन आया। ये तो हेलो नवेद, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम। वालेकुम कह रहे अस्सलाम। हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको मेरा गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटे कल मैंने साइनप्स स्टार्ट कर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ साइनप्स, और जहां मैंने छोड़ा था बताया था मैंने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अगर ध्यान अगर हो, या प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में दो चीजें होती हैं। इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में दो चीजें क्या हैं?
वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर किसमें स्टोर होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स में। The membrane of the postsynaptic neuron, the membrane of the postsynaptic neuron is called postsynaptic membrane. It contains some receptor protein. The membrane of the postsynaptic neuron is called postsynaptic membrane. It contains some receptor proteins. It contains some receptor protein. The small space in between the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane is called क्या कहते हैं उसको? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, CLEFT is called synaptic cleft. The basal lamina, LAMINA, the basal lamina of this cleft contain cholinesterase enzyme. The basal lamina of this cleft contains cholinesterase enzyme. Cholinesterase enzyme which destroy the acetylcholine. Next is function of synapse. The main function of the synapse is to transmit the impulse. The main function of the synapse is to transmit the impulse, that is action potential, from one neuron to another neuron. However, some of the synapses inhibit these impulses. So the impulses are not transmitted, and so the impulses are not transmitted to the postsynaptic neuron. Thus, the synapse are of two types. The synapse are of two types.
One is excitatory synapse and second is inhibitory synapse. एक कौन सा होगा? एक्साइटेटरी और दूसरा इनहिबिटरी. एक्साइटेटरी synapse. इसमें क्या होता है? एक्साइटेटरी synapse में which transmit the impulses that is excitatory in function, second is inhibitory synapses, which inhibit the transmission of impulses, इसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी इन फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? इनहिबिटरी इन फंक्शन. So first is excitatory function. When the action potential reaches to the presynaptic membrane, when the action potential reaches the presynaptic axon terminals, when the action potential reaches the presynaptic axon terminals, the voltage gated की spelling है GATED. The voltage gated calcium channels, at the presynaptic membrane are opened. Now the calcium ions enter in the axon terminals. From the extracellular fluid. Now the calcium ions enter in the axon terminals from the extracellular fluid. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से बाहर का कैल्शियम आयन किस में आ जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आ जाएगा. तो इससे आगे क्या होगा? द कैल्शियम आयन कॉजेज, अब ये कैल्शियम आयन किसके साथ यूनाइट कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा? साइनेप्टिक वेसिकल के साथ. और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर. द कैल्शियम आयन कॉजेज the fusion of synaptic vesicles. The calcium ion causes the fusion of the synaptic vesicles with the cell membrane, and release the neurotransmitter substance from the vesicles by means of exocytosis. EXOCYTOSIS. By means of exocytosis. The neurotransmitter which is excitatory in function
the neurotransmitter which is excitatory in function passes through the synaptic membrane, and synaptic left passes through the synaptic membrane and synaptic left and reaches to the postsynaptic membrane Now the neurotransmitter binds with the receptor protein. Present in the postsynaptic membrane to form the neurotransmitter receptor complex. The neurotransmitter receptor complex. The neurotransmitter receptor complex causes the production of non-propagative electrical potential which is called excitatory postsynaptic potential, Short form is capital E, capital P, capital S, capital P, यानी EPSP. The most common excitatory neurotransmitter in a synapse is excitatory neurotransmitter in the synapse is acetylcholine. The most common excitatory neurotransmitter in a synapse is acetylcholine. The neurotransmitter receptor complex increase the permeability of the postsynaptic membrane, for sodium ion, that is this causes
That is, this causes opening of ligand-gated sodium channels. This causes opening of ligand, LIGA, and ligand-gated sodium channels. Now the sodium ions from extracellular fluid, now the sodium ion from the extracellular fluid enter in the synapse, that is soma. As the sodium ions are positively charged, the resting membrane potential inside the soma is altered मैंने चेंज हो जाना, ALTERE, पांच लाइन रिपीट कर दीजिए. हाँ, as the sodium ions are positively charged, the resting membrane potential inside the soma is altered and depolarization or EPSP, that is excitatory postsynaptic potential is developed, or EPSP, excitatory postsynaptic potential is developed. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है किसकी, EPSP, excitatory postsynaptic potential. So properties of EPSP. The important properties of EPSP are, तीन important properties इसकी होती हैं. पहली क्या है, it is non-propagative, propagative, PROPAGATIVE, it is non-propagative. Second, it is monophasic, monophasic, PHASIC, it is monophasic. And third is, it does not obey all or none law. It does not obey all or none law. All or none law, इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, लिख लीजिए, मेरे को कल तक अपना नन, NONE, नन ला, LAW, ये कल तक आप मेरे को लिख के भेजेंगे बेटे व्हाट्सएप पे. Next is significance of EPSP. Significance मैंने importance और significance of EPSP. EPSP is not transmitted
EPSP is not transmitted into the axon of EPSP is not transmitted into the axon of postsynaptic neuron. However, it causes the development of action potential. However, it causes the development of action potential in the axon. When EPSP is strong enough, it causes the opening of voltage gated sodium channels. It causes the opening of voltage gated sodium channels in the initial segment of the axon. Now due to the entrance of sodium ion, the depolarization occur in the initial segment in the initial segment of the axon, and thus the action potential develops. From here the action potential spreads to other segment of the axon. तो ये कौन सा था? एक्साइटेटरी फंक्शन। अब दूसरा कौन सा होता है? इनहिबिटरी फंक्शन। Inhibitory function. 3 different types of inhibition occur in the synapses. 3 different types of inhibition occur in the synapses. अब ये 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। सेकंड, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, एंड थर्ड इज रेन-शाह सेल इनहिबिशन। पहला कौन सा है? पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। दूसरा प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, एंड थर्ड इज रेन-शाह, RENSHAW, रेन-शाह सेल इनहिबिशन। अब इसको एक एक करके लेते हैं। पहले हम कौन सा लेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। This is also called
This is also called direct inhibition. This is also called direct inhibition. This occurs due to the release of an inhibitory neurotransmitter. This occurs due to the release of an inhibitory neurotransmitter from presynaptic neuron from presynaptic terminals. So this occurs due to the release of an inhibitory neurotransmitter from presynaptic terminals instead of excitatory neurotransmitter. The most inhibited neurotransmitter is GABA. Capital G, capital A, capital B, capital A. GABA. इसका फुल फॉर्म है गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड. गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड. The other neuroinhibitor substance is the other inhibiting neurotransmitter is glycine. GLYCINE. Now, action of GABA यानी गामा एमिनो ब्यूटिक एसिड किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, कैसे काम करता है. द इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस act on the postsynaptic membrane by binding with the receptor the transmitter receptor complex opens the ligand gated potassium channels, ligand gated ligand gated potassium channels instead of opening the sodium channels. Now the potassium ion pass out of the synapse. Into extracellular fluid. synapse से पोटेशियम आयन किस में आ जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में. Now the potassium ion passes out of the synapse into extracellular fluid. Chloride channels also open. Followed by
followed by influx of chloride ions inside. Chloride channels also open, followed by influx of chloride ion inside. बाहर का क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है और अंदर का पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है. द एग्जिट, एग्जिट मैंने बाहर निकलना, ई एक्साइटिंग. द एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन, द एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन and influx of chloride ion and influx पोटेशियम आयन का बाहर जाना और क्लोराइड आयन का अंदर आना. एंड इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन causes more negativity on the inside, more negativity inside, leading to hyperpolarization, leading to hyperpolarization, and this is called inhibitory postsynaptic potential, and this is called inhibitory postsynaptic potential. Second, write down presynaptic inhibition. Presynaptic inhibition. This is also known as indirect inhibition. This is also known as indirect inhibition and occurs because of the failure of the release of the excitatory neurotransmitter. Failure of the release of excitatory neurotransmitter from the presynaptic axon terminals. From the presynaptic axon terminals. Third is Renshaw cell inhibition. Renshaw, R-E-N-S-H-A-W. Renshaw, R-E-N-S-H-A-W. Renshaw cell inhibition. This occur in the spinal cord. The anterior nerve root consists of nerve fibers. The anterior nerve root consists of the nerve fibers leaving the spinal cord. These nerve fibers arises from the alpha motor neuron. These nerve fibers arises from the alpha motor neuron in the anterior gray horn of the spinal cord. These nerve fibers arises from the alpha motor neuron in
anterior gray horn of the spinal cord and reaches to the effector organ and reaches to the effector organs like muscles. Some of the fibers called collaterals, COLLATERALS. So some of the fibers called collaterals end in the Renshaw cell, Renshaw cell, instead of leaving the spinal cord, instead of leaving the spinal cord. अब रेंशा सेल प्रेजेंट कहाँ होते हैं? रेंशा सेल्स आर situated in between the motor neurons. Renshaw cells are situated in between the motor neurons. When motor neurons send motor impulse, some of the impulses reaches to the Renshaw cell by passing via collaterals. Now the Renshaw cell is stimulated. So repeat. फिर समझो. When the motor neurons send motor impulses, some of the impulses reaches to the Renshaw cell by passing via collaterals. The Renshaw cell is stimulated. Renshaw cell in turn sends inhibitory impulse to alpha motor neuron. So the discharge from the motor neuron is reduced. किस तरीके से साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है और दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उसको साइनेप्स कहते हैं. किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करती है, ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है. इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना. एक इसका फ्लो चार्ट है, वो देखो मैं इसका फोटो खींच के आपको भेजता हूँ अभी.
पहुंचा? Yes. ये Yes, sir. WhatsApp पे मैंने भेज Yes, दिया। sir. Yes, sir. यस अभी सर आ गया। इसमें आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा और समझने में और इजी हो जाएगा। तो ये तो साइनेप्स हो गया। अब एक नर्वस सिस्टम है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या कहते हैं इसको, रिसेप्टर्स। हर जगह रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए बेटे। सो राइट डाउन रिसेप्टर्स, RECEPTORS, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या चीज होती है? द रिसेप्टर्स आर डिफाइंड एज the receptors are defined as biological transducer, transducer, DUCERS। रिसेप्टर है कुछ, मैं इनका भी आपको कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका भी आपको स्नैप्स भेज देता हूं मैं। पहुंचा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं बेटे ये। सो द रिसेप्टर्स आर डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। द रिसेप्टर्स आर डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर, TRANSDUCERS, transducers which convert various forms of energy। बेटे 12 से 1 लेक्चर है बेटा आप लोगों का, अभी आधा घंटा दे सकते हो और एक्स्ट्रा? हेलो सर 12 से सर साइकोलॉजी है। Psycho की क्लास है सर, साइकोलॉजी। ठीक है ठीक है ठीक है बेटे, वो मिस नहीं करो बेटे, वो भी जरूरी है। यस सर। The receptors are defined as a biological transducer which convert various forms of energy, that is stimulus in the environment, into action potential in a nerve fiber। अब इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। Receptors are of two types. One is exteroreceptors, exteroceptors, exteroceptors। ये क्या होते हैं? which give response to stimuli,
arising from outside the body, arising from outside the body. Second is interoceptors. Intero, I-N-T-E-R-O, interoceptors, C-E-P-T-O-R-S, interoceptors, which give response to stimuli, arising from within the body. तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? एक्सटीरोसेप्टर. The exteroceptors are divided into three groups. The exteroceptors are divided into three groups. अभी तीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? One is cutaneous receptors. दूसरा है chemoreceptors, and third is telereceptors. First one is cutaneous, second chemoreceptors, and third T-E-L-E, telereceptors. अब ये cutaneous receptor क्या होता है? So what is cutaneous receptor? Yes, I'll check you. You are doing These receptors very good. Myra, do why you have stopped? Yes, continue jogging. Ananya. Yes. कैसे क्या हो गया? बेटा म्यूट योर माइक, ओनली स्विच ऑन योर कैमरा. इतनी जल्दी नहीं करते. Cutaneous receptors. These receptors are situated in the skin. These receptors are situated in the skin. लेकिन रुक के बार-बार पूछना नहीं है. माइक म्यूट. These receptors are situated in the skin and are called cutaneous receptor. These receptors are situated in the skin and are called cutaneous receptors. Cutaneous receptors are also called mechanoreceptors. मैं सब एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ. Cutaneous receptors are also called mechanoreceptors because of their response to mechanical stimuli. Because of their response to mechanical stimuli like touch, pressure, and pain. Touch, pressure, and pain. The different receptors are. इसको मैं यहीं इसका एंड करता हूँ. आप देंगे नेक्स्ट क्लास हमारी क्या कल कितने बजे? 12 से 1 है ना? हेलो. यस सर 12 से 1. 12 से 1 और दूसरा सर 2 से 3. 2 से 3. तो ठीक है, पहले 12 से 1 लेते हैं, फिर देखते हैं उसको. थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू. खुश रहो. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. वेलकम बेटे.